Hello friends, I am Irfan Raza going to teach you history of class 7. This is my first topic and I will teach you the chapter tracing changes through 1000 years. यानी कि 1000 साल में जो changes हुए उसको हम trace करेंगे one by one. The 1000 year period which we will study in this chapter, we will study many things in this chapter and later on in the book. The things which we will study are the context. Context always changes according to the passing of time, and we will study new and old terminologies. What does it mean? The terminologies also changes because of the passage of time in history. So the historians must be careful that in which context they are talking about historical aspects. So the meaning of the things changes according to the context, and languages, grammar and meaning of the words also change with the passage of time. यानी वक्त के गुजरने के साथ साथ लैंग्वेज भी बदल जाती है, ग्रामर भी बदल जाती है और वर्ड्स की मीनिंग भी बदल जाती है. तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हिंदुस्तान हिंदुस्तान जो एक वर्ड है ये कभी हुआ करता था किसी और कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल होता था. आजकल क्या होता है, इसको इंडिया, हिंदुस्तान जो पहले वर्ड यूज होता था, नाउ वी आर कॉलिंग इट इंडिया. इंडिया क्या है, एक नेशन स्टेट है. लेकिन हम देखेंगे कि एक राइटर हुए हैं जो पर्शियन में लिखते थे, उनका नाम है मिनहाजुस सिराज. मिनहाजुस सिराज ने दो तरह के कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया है हिंदुस्तान को. सबसे पहले द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना. पंजाब और हरियाणा के बीच में जो लैंड था उसको ये हिंदुस्तान कहते थे, और गंगा और यमुना के बीच में जो लैंड था उसको हिंदुस्तान कहते थे. करीब करीब यही एरिया. उसके अलावा इन्होंने जो हिंदुस्तान का टर्म यूज किया है वो पॉलिटिकल सेंस में यूज किया है, जो डोमिनियंस ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत का जो एरिया था, दिल्ली सल्तनत के अंडर में जो एरिया आता था उसको ये हिंदुस्तान कहा करते थे. नाउ वी विल सी दैट बाबर हैज यूज्ड दिस टर्म, which term, Hindustan, in the context to describe geography, the fauna and culture of inhabitants of subcontinent. यानी कि बाबर ने जो हिंदुस्तान का टर्म यूज किया है वो इस एरिया की ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया है. fauna and culture, fauna you know the flora and fauna and animals, या ह्यूमन बीइंग, कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट. इनहेबिटेंट्स मतलब जो यहाँ रहने वाले हैं. सब कॉन्टिनेंट कहते हैं जब हम सब कॉन्टिनेंट इंडिया को ही हम कहते हैं. नाउ वी विल सी अनदर टर्म दैट इज फॉरेनर. फॉरेनर इज यूज्ड टुडे एज अ पर्सन हु इज नॉट एन इंडियन. आजकल फॉरेनर जो जिस सेंस में यूज होता है वो उस आदमी के लिए जो इंडियन ना हो. बट इन मिडिवल पीरियड, इन विलेज, एनी स्ट्रेंजर, कोई भी स्ट्रेंजर, यानी कि कोई उस गांव का ना हो, उस सोसाइटी का, गांव की सोसाइटी का ना हो, उसको क्या कहते थे, फॉरेनर कहते थे. और मिडिवल पीरियड में सिटी ड्वेलर्स के लिए फॉरेस्ट ड्वेलर्स क्या हुआ करते थे, फॉरेनर हुआ करते थे. वी विल ऑल्सो स्टडी द हिस्टोरिकल सोर्सेज ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड. द पीरियड इज 700 from 1750. Historical sources were at that time also architecture, coins, inscriptions, textual records. You will study later on these things in detail. Textual records, mainly holy text, these were in written form, letters, teaching of saints, petition and judicial records, यानी जो जुडिशरी से रिलेटेड होता था. Now text, the main important text at that time were manuscripts. Manuscripts were those writings which were written by hand. Manual scripts writing written by hand.
At that time, printing press was not there. So manuscripts, and these were the asset of wealthy people. यानी जो अमीर लोग होते थे, ये उनकी जागीर होती थी. Manuscripts, rulers, monasteries and temples. यानी बौद्ध धर्मशालाओं में या फिर टेम्पल्स में, मंदिरों में ये मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी. जनरल पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट दीज स्क्रिप्चर्स. In this period, new social and political groups were emerged because of new technologies like Persian wheel for irrigation, spinning wheel for weaving, new foods and beverages, नए खाने और नए पीने की चीजें like potatoes, corns, chilies, tea and coffee. These things were taken by different people from different regions. So the people who came here brought with them their culture, their tradition, their living style, their foods, beverages and many things were taken by them to India. This period was also the period of mobility. Several major groups mobilized and they strengthened their power. For example, Rajput, they were also known as Rajputra, means son of ruler. Marathas emerged at that time, very powerful. Jats, Sikhs and several other dynasties emerged during this period. New peasant class. New peasant class was also emerged at that time because of two things. Gradual clearance of forest, यानी धीरे धीरे जंगलों का कटना. तो जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, जो जंगलों में रहने वाले थे, उनको क्या करना हुआ, उनको माइग्रेट करना पड़ा अपनी जगह को छोड़कर. दूसरा पॉइंट था एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलना इस टाइम में. तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे बाद में क्या हुए, वो पीजेंट क्लास बन गए. दे बिकेम पीजेंट एज वेल एज सेमी आर्टिजन्स and full artisans during the period when the period of agriculture was over at that time. This period also saw the expansion of regions and empires, for example Cholas, Tughlaq and Mughals. In Sanskrit Prashasti, a type of writing, Ghayasuddin Balban was described in that writing. Old and new religion. At that time, old and new religion were changed. For example, in Hinduism, when we see that worship of deity started and construction of temples started and patronage of royalty was started also in the construction of temples. Connected with social and economic organization of local communities. At that time, religion was connected with social and economic organization of local communities. An idea of bhakti was also emerged at that time. Historians don't see time as a passing of hours, days and years. Study of history is more easy by dividing it into periods. British historians divided the period of history into three: Hindu, Muslim and British. Hindu era, Muslim era and British era. Other scholars used periodization. They divided the history in ancient, medieval and modern period. Though we can say that these periods were not modern, it can't be said only this is modern, but historians divided in this aspect. Thanks for watching. Please like, share and comment on this video and also subscribe if you are new on my channel.